Hi, good evening, friends. I welcome you all to one more energizing session on hairdressing. It's a topic of interest for so many of you, and we all love hairdressing, hairstyling, and we have an expert, an international expert, to talk on it today. So let's wait for some time till we have more people joining in. Hello, good evening all. I welcome you all again in one more amazing session on hairstyling and hairdressing as a career, as a global career. We have a celebrity from US all the way joining in now in 5 minutes. Her name is Alisha Chauhan. You have read her bio when we posted on Instagram and Facebook. How have you been, people? I can see a lot of people over here. Ash and Makeover by Hina Khan, Shravani, Dhanashree Jaiswal, The Pure Bit, The Makeover Salon by Hina, Priya's Makeup and Hair Artistry. Hello, Sheetal, Rupesh, Dosti Diaries, Bhandari Bharat Kumar. Hello to all, Vaishnavi, Veena, Saili. Hi, how have you been? So we are just waiting for Alisha to wave us and to join in. She is joining us from US and it's 6 a.m. Right now over there in Seattle. We have to wish her good morning. Hi Harshi. Good evening to all. And let's wait for 2 minutes to build up the audience and for Alisha to join us. I can see Gracita, Preeti, Dipali, Nitin Shah, Darshita. Is the video paused? Can everybody see the video? Mrunal is saying the video is paused. Can everybody see the video? Hi Shubhangi, Priya. If the video is paused, please type paused in the comment box. I think there's no problem from my end. I can see Snehal, Sonali, Harvi Chintan. I think hairdressing is very close to heart to a lot of people, because a lot of people personally messaged me, wow, this is such a lovely topic, and we never thought of, as a hairdressing as a global career. We thought we can just work in our city or we can just work in our country. And yes, it is not so easy, for an Indian hairdresser or Indian makeup artist to make a name in the global community. So I think there are lot of people from India who are making their name in the global community of hairdressing or makeup. The lots. Alisha, if you're watching us, you need to just say hi, hello, and I'll take you in. Alisha is messaging me. Ananya Zadav, Gule Sujata, Sachin, Budhwani Gulzar, Princess Beauty, Makeover. We're just waiting for Alisha Chauhan. She's joining us from Seattle, US, and maybe there must be a little bit lag. I'm not sure. So just waiting for Alisha. In case you have any questions, just keep typing in. She has very less time. We cannot take Alisha for more than 55 minutes.
She has a call after 55 minutes, so I will be talking after that. So if you have any questions, you can just keep typing while she is talking. We're just waiting for Alicia to join in. We have a lot of questions to ask her on education in hairdressing, how she, she has built her career through right education, through right mentors, what is OMC, what is World Skills, how you can apply, what is the age criteria and what practices you need, how is the US industry for hairdressing or beauty industry, and how is the Indian industry. So there are a lot of things we will know today which are for India and for US. So all the people who are watching this and are planning to make a career, global career, want to settle somewhere, I think Alicia can guide them very well. Alicia, if you're watching us, you need to just wave and ask me to take you in. Alicia, are you watching us? Let me just check, guys. Maybe she is not able to connect. I don't know what is the problem. It might take few seconds more for her to join in because she is joining in from US. Alicia, if you're watching us, please wave your hand or say hi. I can take you in. Let me message Alicia. Hi Alicia, can you hear me? I don't know. I think there's some lag because it's taking time. Hi, good morning. Hi, how are you? Very good. How are you? I'm good. It's so great to see you after such a long time. Very long time. After 2000, I think 60. Maybe? Yeah. Maybe? You look so radiant. Thank you. You too. And Thank you. so much for waking up so early. Good morning to you. It's 6 a.m. in Seattle and she must be awake an hour before at least. So thank you so much. And it's an honor. Thank you so much. No, thank you so much for having me. And I love to be on your platform. And I was like, oh, Kalyani just invited me and I love Kalyani, so let's just go ahead. That's good. Yeah, that's good. So I talked about you a lot. People already know who you are. Now let's start. Okay. We've already, the session has started. So Alicia, quickly, we wanted to know your journey, how you started, what motivated you to be a part of hairdressing and what, keeps you going. So please, over to you. Okay. So that's a lot of questions. I'll take one by one. First thing, hairdressing was never part of the plan. Beauty industry wasn't something that I decided on doing. I was an engineer. Hair and makeup just came like, whoa. So I realized that I don't want to be behind a desk. And then I said, okay, let's just let's do the MBA thing and join parents' business and manage that. So that's what I did. Now I did not realize that the world of competitions will come in. So when I started doing a lot of OMC world competitions, which we'll get to, I know, in later. But when I saw that kind of world and that type of creativity, I was immediately enamored. I was never that creative person in life. My teachers never gave me an assignment to do creative handwriting or painting on the walls. Never. They were like, stay away from the school magazine. and but however, I just realized that there's so much to play with in the industry. And hair and makeup and beauty is not just salons. It's so much out there. So that I think really attracted me. That was like a bonus. And then I started my journey with, I would say, a pat on my back
by my mother, who said like, if you put your mind to it, you'll do anything, and a stern look by my father, who was like, "Are you sure? You spent 4 years in engineering." Ah. So yeah, that's how it started. Okay, so who's your guru in hairdressing? From whom all you learned? And we want to know how education in hairdressing, a right education in hairdressing, have led you to what you are doing today. Awesome. Yeah. So as I said, my journey started with international competitions. So OMC competitions was something that I started with. I've been trained by 10 different people in 10 different countries now. And that does make me like a mixture and amalgamation of so many techniques. My guru definitely has to be my mother. It's like a first person telling you to cut the hair and not your hand, but that's what you end up doing and bleeding yourself, and you're like, this is crazy. And she was the first one who told me like, this is eyeshadow brush and this is a liner brush. I was like, looks the same. so so yeah, it started from there, and you definitely keep building on. I have great relationships with all my mentors, everyone. I don't think there is any one person I can put my hand on who say, and I say like, this is best. No, everyone is so unique and has added to the flavor I am today. Mm-hmm. Yeah. Lovely. So yeah. So your journey from India to US, you are still active there, and you're working so hard. I can see you in all WhatsApp group, all over Facebook. You're working on 2 time zones in India, US time. How do you manage all that? You being so busy. I've seen you a very small girl to a married woman. So how do you manage all that? Let me just do a mental laugh because I like to hear this. Okay, so how do I manage? First thing first, this coffee. Okay, but I think it's a lot of the energy comes from people, the community. Because I see the need and I see the love that I get and the response that I get. I think that's what really feeds me, Kalyani. Whenever I do anything, if I'm doing IVA presentations, that's what feeds me. If I'm doing Baristry Salon these days, that's what feeds me. There were like 300 people last night and they were like, yeah, sign me up, sign me up. So stuff like that, because I see the need for it. Even when I do a lot of international classes for people in Europe and Australia, same thing. They just love it. People's energy is what drives you. And when I see people's response and I see the need in the market, and I would say just love and the reciprocity is what keeps me going. I feel that if you don't love what you're doing, you'll be tired too soon. And when you become tired too soon, there's no way to fake enthusiasm. You can't really fake it, and there's no rule of fake it till you make it. I don't think that works. It doesn't work for me. Might work for people, but I think you'll quickly age if you don't like what you're doing. And so my biggest way to go forward is believe in community, have people who have the same values as you have, and just keep going from. True. So I want to know the role of education. You have been educating people. You are also educating. You are also getting updated. So role of the importance of getting a proper knowledge from a proper teacher, because nowadays there's like a lot of distractions for people on Instagram, on YouTube. They'll watch video, and if somebody comes for a makeup course to us, they're like, मुझे makeup आता है, मैंने YouTube पे देख के सीखा है. So I feel like should I laugh or should I do this, or what should I do? So please explain how important it is for a teacher to watch you while doing, to correct you, or a proper mentor, in any hairdressers or hairstylist life. So I want to know it from you. Mm-hmm. So think of it like this: education is, everyone knows, the foundation, but it is also something that sets your mind clear. Now, for example, when I signed up for hair and beauty industry, I was an engineer, but zero in everything else. And I know something.
I know that once you have, if you're not properly educated, you'll have holes and gaps in your knowledge, and that comes through. That Right. comes through, if not today, tomorrow, day after tomorrow. Now, regarding all these apps, IG, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, well, like whatever you are on, there are like zillion apps. Those are good to create an awareness. If I want to learn extensions, they are good to create awareness. So if I want to learn a, let's say, a BDN extension, I will get aware about their technology from Instagram. But can I learn how to do a BDN extensions from IG? No, because IG think for it yourself. IG only allows 15 minutes videos on IGTV and 1 minute on the wall. Those are not great educational videos. Sometimes when we see demos and when we do demos, they take at least 2 hours to properly explain and do it. So these platforms are great if you want to create awareness and traction and marketing. But having said that, none of them support education. In YouTube also, there are restrictions of what content can go in, what content cannot go in. So again, these are great platforms to create awareness, but not, they're not enough. They're like, they'll introduce you, but I don't think that's enough. I am, as you can see, I'm not 100 years old. I'm pretty young. And I think a major part of my, let's just say, credibility comes from good education. And because I invested in with the right people at the right time, I have taken classes which one day could be $500 and then 5 days was also $500. Like whatever it takes, I was completely non-negotiable about it. There is no supplement to knowledge that True. I can't do if I have a client who has, for example, a bleeding hairline and she has overprocessed hair. Now what will I do? Will I just think of a YouTube video how to do an overprocessed hair, or how to, or what to do with a skin which has already been maybe acid attack, like whatever that is? Are you googling and going there and educating yourself right in the restroom? That can't be happening, right? There are so many aspects to hair and beauty and everyone is unique. I think gone are those days when people were like one size fits all, one haircut for everyone, one makeup for everyone, one facial for everyone. This is the day and age for customization. This is the day and age where people want things just for themselves. Even if they're getting facial, they want to know what is going inside it, what's the ingredient in it, or maybe in hairdressing, they want to have the haircut customized for their face. Gone are the days where people like, give me Priyanka Chopra look. I think they're like, this is like Priyanka Chopra, but I have customized it for your face. That's what they want. And that's the key point. Customize it for your clients, and you'll be only able to do that if you've properly educated yourself and you've properly gone to the best people in the industry. And I would say IG, Facebook, and YouTube are great channels to see their presence and see their work, but they're not something to learn. I mean, for even myself, I think I have restrictions on what I post versus what I teach, because there's just so much, and then you can't have everything up online. So definitely, Kalyani, if there's someone who comes to you for makeup and who says that I know makeup, you just have to tell them that probably, I mean, we will just do a more professional and a deeper master level makeup, not like jazzy words. I know. It's the, we have to face it. It's going to be there for a very long time. Okay, now Correct. coming to OMC and World Skills. You have been a trainer for World Skills. You have been a medalist for OMC. So first is, what is OMC, and then what is World Skills? People are unaware about it. We need a guidance from you. Okay. So OMC, let's not talk in acronyms. OMC stands for Organization Mondial Coiffure. Okay. Yeah. I was a computer science engineer when I first visited the OMC Asia Cup in Sri Lanka with my mother and a bunch of friends. And I was like, is this hair? Is this plastic? Or what is this? Like, what are these mannequins, and how is this hair moving and standing up like that? Yeah, it's crazy. Yeah. Yeah, massive. And then there are people from all over the world, and I see people enthusiastically doing body painting for like 5 hours. And I remember I was backstage, I was like, that was it. For 5 hours, I was,
Okay, it was completely unbelievable. So they do world competitions, and it's, I think, the organization was formed in 1940s. So before India got independent, they were doing the competitions, and it's just a very developed and mature organization which has been doing international categories of competition in hair, makeup, and nails for a long time. And I see that they have immense talented trainers. So that's what really, as I said, inspired me to participate. I started training myself for all these amazing competitions, and I started just having fun. My first competition, I would tell you, Kalyani, and I'm completely unashamed about it, was disaster. If I show you the picture of my first performance in my first competition, I think you would have just said, Elisha, you did a bad job, and I What, think you what should was go back to the computer industry. what was your age when you participated in the competition? And if somebody wants to be a part of OMC, what is the age Uh-huh. criteria and what is the education they require? So there is no age restriction. You can be as young as 16. There are people who are in cosmetology schools, and I have seen youngest to be 16, 17 in OMC platform. So there, and because the good thing is they have a junior category and a senior category. Junior category is under 22. Mhm. So it's not that you are competing with someone who's 60 years old. Okay. You're competing in under 22 categories. So junior categories are where you go if you're pretty young. You don't really need any qualifications. All you need is an organization that is a member of OMC. So like IBA was signed up with OMC, and then the organization has to nominate you, and definitely you have to pay your fees through and get through there. So that is one way that you can enter OMC, and it's an amazing world. That's where, if you see all these amazing jazzy mannequins around me, let's just say I've inherited that from the world of OMC. So, And so somebody who's watching and who wants to be a part of OMC competition needs to contact IBA or to whom? yes, they should definitely contact IBA that they want to be part of the next OMC. In fact, which gives me a very good news. Last month, OMC, after the pandemic of COVID-19 was announced, generally, if you participate in OMC, it's about $500 per category, Kalyani. And this year, because it's COVID pandemic, they've made it free. Oh, is it? But they must be You believe online, that? right? Certain categories are online, but even you can go to Paris and compete, and Lovely. zero, like Okay. nada. It's never happened in my 10 years of knowing OMC. That's great. I was like, That's great. because I think they realize that people are going through heavy losses, and salons are shut down all over the world. It's not just one part in one country, in one city. And I think that's why they've done that. So, That's great. I mean, it's a fabulous time if you want to test waters. Yes, and where do people get more information about OMC? If they want to go much in deeper, they want to go ahead, can you tell the website or can you? Yeah. Yeah. Definitely. So on Instagram, you can go to hash at the rate of OMC hair, HAIR, world, WORLD, and then the website is same, www.omchairworld.com. Simple, easy peasy. Okay. So they get all the information over there. 100%. Okay. Authentic My next information. question is about the World Skills certificate, the World Skills competitions. What is the age criteria? What are the the openings in hair, and at what age group they can apply? So people need guidance from you. Okay. So the only restriction that WorldSkills has is you need to be less than 22 years of age when you are competing. And the thing with, so the difference in, so there are different tastes of competition, I would say. In OMC, you can just do one category. You can just do bridal hairstyling, in and out, and that's it. So that we call it one category. In World Skill, bang on, you have to do like 8 different categories in hairdressing. So you have to do like ladies cut, men's cut, you have to do the beard, you have to do perm for them, you have to do chemical, you have to do several categories, and you have to be on time to participate that. Now, how do you participate? There are state
competitions and district competitions that BWSSC does in India. You have to go through them. And once the beauty and wellness sector's competitions, as you keep winning, they'll train you. And once you are in top 2 to 3, you'll get more intensive training, and that's when you represent the country. And one good thing about WorldSkills is you don't pay a dime if you keep winning. The country invests for you in all your education, and I think it's like, wow. Wow, I think when I got to know about WorldSkills, I was 3 years overage. I was like, dang. Because I have seen people investing so much of time and energy and effort in, training for WorldSkills. I haven't witnessed OMC as yet, but I have witnessed so many WorldSkill competitions and the practices backstage, and it's very tough. It's tough, very tough. Okay. Yes. Now we want to know what is the difference between the US industry of hairdressing and the Indian hairdressing industry or the education. Can we do this question in Hindi, Alisha, if you are comfortable? Yes, completely. I'm बहुत comfortable हूँ. इंडस्ट्री का बहुत इंडस्ट्री डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो यूएस की इंडस्ट्री है, इट वर्क्स ऑन, वो हमेशा लाइसेंस पे काम करती है. आपको हमेशा पहले ब्यूटी स्कूल जाना पड़ेगा, आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स फिनिश करने होते हैं, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है. एंड जब तक आपको लाइसेंस नहीं है, आप अपना सैलून में काम नहीं कर सकते हो, अपना बिजनेस नहीं खोल सकते हो, एंड ऑल ऑफ दैट. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइसेंसर. तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है. सेकेंड डिफरेंस आई फील इज क्योंकि बहुत एजुकेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, लाइसेंसर इन्वॉल्व हो जाता है, और उनको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में पहले ज्यादा बता देते हैं. सो पीपल आर मोर अवेयर. इंडिया में थोड़ा सा अनयूनिफॉर्मिटी कम है. एक पर्सन ने 3 months का कोर्स किया और फिर सैलून खोल लिया, एक पर्सन ने प्रॉब्ली 1 year का हेयर ड्रेसिंग का कोर्स किया और फिर सैलून खोला है. सो दोनों की नॉलेज में वास्ट गैप है, एंड देन देयर इज एवरीवन इन बिटवीन, है ना. तो उस चक्कर में इंडस्ट्री की स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ी वेरिड होती है, एंड दैट इज वाई हमारे कस्टमर्स ज्यादा सवाल भी पूछते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि जिसके पास हम जा रहे हैं उसको कितना उसने बैकग्राउंड लिया है. एंड लाइक आई सेड कल्याणी, अगर इफ यू नॉट एजुकेटेड योरसेल्फ, फिर आप गूगल करते रहोगे कि इसका क्या करना है, अब इसका क्या करना है, क्योंकि 3 महीने में आप कितना ही नॉलेज लोगे. ह्यूमन ब्रेन का कैपेसिटी होता है एक, कि मैं एक दिन में सिर्फ इतना सीख सकती हूँ, right? It's just how our like body functions. So that is one thing, one major difference. फिर I think talented तो दोनों countries हैं. I would not say कि एक country में मेरे पास I have great friends जो US में है और बहुत amazingly talented है, और great friends जो इंडिया में और बहुत amazingly talented है. तो again, talent does not divide itself by countries. बट हाँ, आई वुड से कि कंपैरिजन के लिए नहीं पूछा मैंने, इसलिए पूछा क्योंकि काफी लोगों को अभी मे बी दे कोविड है, इसलिए 2 साल तो कोई सोचेगा नहीं, बट हियर आर पीपल हु वांट टू लर्न सिडेस्को या एनी हेयर ड्रेसिंग कोर्स, दे वांट टू सेटल, मे बी दे आर गोइंग विद देयर स्पाउसेस और दे वांट टू सेटल ऑन देयर ओन. So for that, is a proper education is the only way, or there has to be a guided education under US authorities, and then only they can, like, how is the procedure? Like for doctors, they have to have a degree there. For a cosmetologist, a degree there. But a CEDESCO can help them to work in US. So in hairdressing, क्या है? So I feel knowledge कभी वेस्ट नहीं जाता है. अगर उन्होंने इंडिया से CEDESCO का कोर्स करा हुआ है, तो उनको ऑलरेडी एस्थेटिशियन, they're aestheticians, right? So already they are established. They are well. उनका नॉलेज सही है. तो अगर वो यूएस में आएंगे, आई थिंक एस्थेटिशियन का इज 750 hours, 5-6 महीने के लिए उनको कॉलेज जाना पड़ेगा, एंड दैट्स इट. वो नॉलेज एडेड ऑन होती है. वो नॉलेज ऐसा नहीं होता कि ये करो वो मत करो, बिकॉज अगेन क्यूमुलेटिव नॉलेज है. सो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप इंडिया में थोड़ा कॉस्ट भी ज्यादा इफेक्टिव है, सो आप ज्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ज्यादा लोगों पे प्रैक्टिस कर सकते हो, और डिफरेंट स्किन टाइप्स आपको मिल सकती हैं, और जिससे आपका नॉलेज बढ़ता है. अगर आपका नॉलेज बढ़ता है और वो टोटल काम आता है, तो इवन यूएस में
जब आप बताते हो कि मैं ऑलरेडी इंडिया में सिडेस्को करके आई हूँ और बस मैं यहाँ पे बस कॉलेज जा रही हूँ सो दैट मेरा लाइसेंस हो जाए, सो क्लाइंट्स विल कम टू यू, भाग के आएंगे आपके पास, क्योंकि उनको चाहिए कि एक्सपीरियंस पर्सन हो, उनको चाहिए कि ऑलरेडी एंड दिस बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी है यूएस में जो आपका पोटेंशियल मार्केट हो सकती है. सो अगर आपको इंडिया से सिडेस्को, सिप्टैक, एबीटीसी ये सारे प्लेटफॉर्म्स करने हैं, आई रेकमेंड यू डूइंग इट, क्योंकि नॉलेज एड ऑन होती है. एंड गेट स्टार्टेड. अगर आपको पता है कि आपको ये करना है, गेट स्टार्टेड. डोंट वेट कि मैं 2 साल बाद शादी करूंगी, फिर हनीमून जाऊंगी और फिर मैं यूएस के कॉलेज में एक्स्ट्रा पैसे भरूंगी. एंड क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रैक्टिस मिलती है कॉलेजेस में, इंडिया में ज्यादा प्रैक्टिस मिलती है, दैट मेरे को ऐसा लगता है. So you can give your example. So Alisha is the best example जो यहाँ से पूरा सीख के फिर शादी करके वहां गई है. Please give your example. What are you doing for marriage? Yeah, because this is the valid point what you raised. Because girls feel after the marriage, my husband has promised. बट एक बार वो इंडियन सिनेरियो में आप शादी करके गए तो इतना टाइम भी एजुकेशन के लिए नहीं मिलता, और वो जो लिबर्टी आप मम्मी के घर पे हो तब तक जो, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग. आई वाज सिडेस्को at the age of 21. I got married at the age of 22. And like मेरा एक बोलते हैं एक स्टेप तो आगे गई थी. So I want to know from you for the girls, because this industry at least in India is 80% driven by females. Correct. How can you guide them? ये कैसे करना अच्छा है, पहले या बाद में? Because we both are the same examples. So you are. Yes, 100%. Yeah, actually I didn't know about this. I didn't know about your story. Awesome. Yeah. So you're completely right. I see. Marriage brings its own set of world. ठीक है, मैरिज के साथ उसका पैराफर्नालिया होता है. There could be family involved and different world start हो जाता है आपका. तो आई एम समवन जो मेरे को चेंज पसंद नहीं है लाइफ में. नो, सो मैरिज इज अ चेंज यू एंड देयर समथिंग कि आप डिनाई नहीं कर सकते हो. तो एंड करियर मूव करना या फिर कॉलेज में जाना, स्कूल में जाना, अकेडमी में जाना इज अ चेंज, क्योंकि आप एक नया स्किल अक्वायर कर रहे हो. राइट, फेशियल के लिए ऐसे हाथ ऐसे मूव करना चाहिए, पेट्रेसाज करनी है, वो सब करना है. अभी वो मसल्स को आदत ही नहीं है ऐसे नेडिंग करने की, अभी क्या करेगा ये. राइट, उसको थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, चलो चलो काम करो. सो उसके लिए आई से वन चेंज एट अ टाइम, so that you're easy on yourself. One change at a time पॉलिसी बहुत अच्छी वर्क करती है. एंड आपका दिमाग भी काम रहता है. इट्स ओके. तो डेफिनेटली अगर आप इंडिया में स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली इंडिया में स्टार्ट करना चाहिए. एंड मैंने भी सेम किया था. मैंने अपने कॉम्पिटिशन्स करे थे. आई थिंक यूएस में शिफ्ट होने से पहले मैंने ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज ऑलरेडी विजिट कर ली थी ऑन माय पासपोर्ट. एंड मैं डिफरेंट कंट्रीज में जाती थी, रिप्रेजेंट करती थी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स या फिर कॉन्फ्रेंसेज में हम जाते थे. एंड आई नो यू ऑल्सो ट्रैवल इन ग्रेट कॉन्फ्रेंसेज अक्रॉस द वर्ल्ड, सो वी आर ऑन द सेम पेज ऑन दैट. तो उससे हेल्प होती है कि आपके पास एक ग्लोबल विजन होता है, आपके पास एक नैरो विजन नहीं है. आपको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, एंड दैट हेल्प्स यू कि आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो. नाउ अगेन नॉलेज इज समथिंग जो मैं बोलती हूँ एक के ऊपर एक बिल्ड ऑन होती है. राइट, ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ 6 महीना यहाँ से करा है एंड इज समथिंग. एक्सपीरियंस मैटर्स, चाहे वो कहीं का भी हो. एंड आई थिंक इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, क्योंकि वहां पे आपको वेरिएड एक्सपीरियंस मिलेंगे जो यूएस में मिलना मुश्किल है. तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई फील कि आपको अपना करियर इंडिया में स्टार्ट कर लेना चाहिए. 1-2 साल काम करो. सो आई वुड से गो टू एटलीस्ट 6 मंथ से कम तो कोई भी कोर्स नहीं होता है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो हेयर का हो, चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो मेकअप का हो. 6 मंथ्स में बोल रही हूँ फुल टाइम, सैटरडे संडे मिला के. अगर आप सैटरडे संडे ले रहे हो अपनी लाइफ के लिए, देन गिव इट 8 months और ईयर. राइट, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी जरूरी है. आपको सिखाया है ब्लो ड्राई, तो आपको जाके फ्लोर पे करना है, क्योंकि मसल को आदत नहीं होती है ऐसे ब्लो ड्राई का ब्रश रोल करने की. इट्स क्रेजी. एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि कितनी स्मॉल चीजें ऐड करती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई नो कि अगर आपको ब्लो ड्राई करना नहीं आता तो आप कितनी भी क्वेश्चन ही बना सकते. एंड व्हाई वुड आई से दैट?
बिकॉज आप हेयर को प्रेप ही नहीं कर सकते, वो हेयर कभी शाइन ही नहीं करेगा, और उसके लिए आपको अपना मसल को ट्रेन करना है. यू शुड फील योर टेंडनाइटिस बोन. एंड क्योंकि जब तक आपने नहीं फील करा, मतलब आपने अपना पूरा जान नहीं लगाई, यू हैव नॉट रोल्ड इट इनफ. So that is what I'll say कि you have to start your you have to start somewhere. Start in India. बहुत एक्सपीरियंस मिलता है. आपकी मासी, चाची, मामी, ताई सब आ जाएंगे आपके पास, आपके मॉडल्स बनने. एंड क्योंकि यूएस में आके आपके पास ऑलरेडी कल्चर शिफ्ट होगा, या फिर आप यूरोप जा रहे हो. आई एम नॉट ओनली सेइंग यूएस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड कहीं पे भी मूव हो रहे हो, यू रियली नीड दैट एक्सपीरियंस जो आपको इंडिया से मिलता है. फिर आप विद द लाइसेंस ऑन टॉप ऑफ दैट, जिस भी आप कंट्री में जा रहे हो, चाहे आप कनाडा में मूव हो रहे हो, वेर एवर, और उसको, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज आई थिंक लीथल. एंड मेरे लिए वो वर्क करा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कर लिया था. फिर मैं यहाँ पे आई डिड माई कॉस्मेटोलॉजी. सो लगभग 11 महीने मैं तब कॉलेज गई. फिर मैंने इंस्ट्रक्टर्स लाइसेंस करा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पढ़ाना है. एंड यूएस में इंस्ट्रक्टर्स लाइसेंस के लिए आपको एडिशनल 5 महीने कॉलेज जाना पड़ता है, जिसमें आपको वो कुछ नहीं सिखाते अबाउट हेयर, मेकअप, ब्यूटी. सिर्फ ये सिखाते हैं कि पढ़ाते कैसे है. सो दिस इज लाइक अ B.Ed. It is like a B.Ed. I didn't Yeah. know. And yeah. So Can you that, tell me and trust me, I love tell me instructor's about- license. I feel, Can you yeah, tell I me mean, I feel कि, yeah, definitely. So instructor's license, मेरे को लगता है कि मेरा लाइफ के, कॉलेज लाइफ के इन यूएस बेस्ट एक्सपीरियंस थे. I mean, हमारा स्मॉल बैच था, एंड 5 महीने का कोर्स होता है. एंड हम रोज कॉलेज जाते थे, एंड आई वाज लाइक फ्रस्ट्रेटेड. ये ना मुझे हेयर कट सिखा रहे हैं, ना मुझे कलर सिखा रहे हैं, ना मुझे स्किन सिखा रहे हैं, ना मुझे मेकअप सिखा रहे हैं. सिखाएंगे क्या मुझे? लाइक क्या करेंगे मेरे साथ ये? बट देन बूम, दे एक्चुअली टोल्ड मी कि हर एक पर्सन सेम वे से नहीं सीखता है. सो मैं बहुत ही फैक्चुअल पर्सन हूँ, मुझे साइंस पसंद है, ठीक है, क्योंकि दैट्स माय इंजीनियर बैकग्राउंड है. आप मुझे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ा दोगे, मैं खुश हो जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे फैक्ट्स दे दिए. नाउ मेरी एक और कलीग है जो इंस्ट्रक्टर्स लाइसेंस में थी. उसको नहीं समझ आता, उसको म्यूजिक, आर्ट, उसको ड्रॉ करो, कलरफुल चीजें बना के दिखाओ बोर्ड पे, तो उसको समझ आ जाएगा. एंड शी इज वेरी टैलेंटेड. हाँ, ऐसा नहीं है कि शी इज एनीवेयर, लाइक बहुत क्या बढ़िया काम करती है. अगर व्हेन शी स्टार्ट्स वर्किंग, यू लाइक क्लासी. बट उसको समझ कैसे आता है, उसके लिए थोड़ा बैक. तो फिर वी रियलाइज अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स जो होते हैं, और हर एक लर्नर के लिए कैसे आपको अपनी सेम क्लास कस्टमाइज करनी है. सो बेसिकली व्हाट आई लर्नड इन दैट वाज, आपको वैसे नहीं सिखाना जैसे आप सीखे हो. एज अ टीचर आपको वैसे सिखा रहा है जैसे सामने वाला सीखता है. रिमेम्बर, हम सब स्कूल में होते थे और हमारी टीचर हमें कुछ सिखाती थी, तो कुछ लोगों को आ जाता था बड़ी जल्दी, एंड मुझे तो नहीं आता था. एंड टीचर हमेशा ये समझती थी कि हमें नहीं आया है, बट हम लेस इंटेलिजेंट नहीं थे, हमें जस्ट डिफरेंट वे में समझ आता था. एंड वी ऑल लव टू हैव दोस टीचर्स जो सिंपैथेटिक होते हैं, जो जज नहीं करते हैं, जो आपको प्रॉपर टाइम देते हैं. सो आई थिंक इंस्ट्रक्टर्स लाइसेंस इज ऑल अबाउट बीइंग ह्यूमन एंड टीचिंग इन सच अ वे कि सामने वाले को समझ आए. आपके अंदर नॉलेज है, या आपके, सपोज आपको थ्रेडिंग आती है, ठीक है, और मेरे को थ्रेडिंग सीखनी है, तो हमें क्या बोलते हैं कि ऐसा है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, थ्रेड स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि हमने वैसा सीखा है, तो हमें लगता है कि ऑब्वियस है, कॉमन नॉलेज है, तुमसे ये नहीं हो रहा, लाइक दैट एटीट्यूड. बट इंस्ट्रक्टर्स लाइसेंस ने मुझे सिखाया कि सब लोग अलग सीखते हैं, सब लोग अलग ह्यूमन बींग्स हैं. तो सिखाना इज अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर वर्सेस सीखना. एंड कैसे कैसे आप डिफरेंट अपनी सेंसेस को एंगेज कर सकते हो. सम पीपल लव टू स्मेल समथिंग नाइस. मेरा एक फ्रेंड था जो इंस्ट्रक्टर्स लाइसेंस में था, उसको लैवेंडर का स्मेल बहुत पसंद था. तो जब एक दिन उसको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, तो मेरी टीचर ने क्लासरूम में लैवेंडर ऑयल का वेपराइजर लगा दिया. एंड देन उसने क्रिस को फिर से लाइक दैट वाज माय फ्रेंड, सो उसने फिर से उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, एंड इन हाफ एन आवर ही वाज लाइक, आई गॉट इट. That's so wonderful. It's like understanding I feel it's very human approach, है ना? It's very human approach, and they treat you like human, and they don't judge you. And one good thing about instructor's license is
it also tell me कि अगर आपको अपने स्टूडेंट के साथ आई वुड से कौन से कॉन्वर्सेशंस हम बोलते हैं, लाइक सीरियस कॉन्वर्सेशंस करनी होती है, क्या कन्फ्रंटेशंस करनी होती है, तो कैसे आप उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो. क्योंकि कुछ लोग मैं देखती हूँ कि वो उनको ना बड़ा डर लगता है कि हम मेरी टीचर मुझसे कैसे बात कर रही है, या यू नो समटाइम्स हम रियलाइज नहीं करते कि जब हम अपने स्टूडेंट्स को फीडबैक दे रहे हैं हम हार्श हो गए. हमारे हिसाब से हम हार्श नहीं थे, बट उनके लिए वी वर वेरी हार्श. सो कैसा अपना टोन रखना चाहिए, क्या वर्ड्स यूज करने चाहिए इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि अगेन देयर ऑन अ लर्निंग कर्व, राइट. वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अनईजी है. And probably, and people go through stuff in life. I know people go through divorce and like they have kids and all that stuff. So कैसे empathetic रहना है and really help करनी है लोगों को to learn. So I think instructor's license was again best 5 months that I invested. Wonderful, good, good. You know shifted to that because I was not aware about this license. And what about the cosmetic license, cosmetologist license you were talking about? What is that? So cosmetology license is hair, makeup, nails, and that is everything. I feel expertise. I mean, आपको थोड़ा wigs के बारे में पढ़ाएंगे, anatomy के बारे में पढ़ाएंगे, nail care, nail services, facial, waxing, like everything is put together one and it's called cosmetology in US. तो I went for that because मुझे लगता है कि एक सुपर सेट का लाइसेंस होना चाहिए. आप कम आवर्स का लाइसेंस भी कर सकते हो, सो दैट्स कॉल्ड एस्थेटिशियन या मसाज थेरेपिस्ट. तो वो लोग सिर्फ स्पेशलाइज करते हैं, बट फिर वो बाल का काम नहीं कर सकते हैं. और लाइक डिफरेंट लाइसेंसेस. आई नो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स नेल टेक हैं क्योंकि उनको सिर्फ नेल्स करना था, उनको नहीं करना था हेयर, उनको नहीं करना था फेशियल, एंड उनको नहीं करना था स्किन केयर सर्विसेज. सो दे जस्ट वेंट फॉर नेल टेक. तो जिस भी आप कंट्री में मूव करते हो उसके अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं. आई नो यूके में अलग लाइसेंसेस हैं, न्यूजीलैंड में अगेन अलग लाइसेंसेस हैं, एंड हर कंट्री डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है. यूके फॉलोज अ लॉट ऑफ BACTAC एंड सिटी एंड गिल्ड्स, एंड बहुत सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यूरोप में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं. यूएस में हर एक स्टेट अलग फॉलो करती है. सो आई नो स्टेट ऑफ वॉशिंगटन जहां पे मैं हूँ उसके अलग गाइडलाइंस हैं. स्टेट न्यूयॉर्क के अलग गाइडलाइंस है. न्यूयॉर्क में आप 1100 आवर्स में ग्रेजुएट हो सकते हो एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट. वॉशिंगटन में आपको 1600 लगते हैं. कैलिफोर्निया में 2100 आवर्स लगते हैं. सो 2100 इन टर्म्स ऑफ कितना कॉलेज में घंटे खत्म करने हैं. But and clocking करना होता है. in other state, like somebody did New York में 1100 का cosmetology course. Does that apply to Washington? No, they have to when they move to Washington, they have to do additional 500 hours. That's it. Okay. Yeah, मतलब सिर्फ 500 घंटे के लिए they have to go to college again, and फिर उनका लाइसेंस अपडेट हो जाता है. नहीं तो अगर वो न्यूयॉर्क में फॉर एग्जाम्पल 10 साल से काम कर रहे थे तो वॉशिंगटन में it's called reciprocity. तो अगर आप सिटी टू सिटी या स्टेट टू स्टेट मूव कर रहे हो तो आपको सिर्फ रेसिप्रोसिटी का फॉर्म फिल करना होता है उस स्टेट में, उस स्टेट को पैसे देने होते हैं, एंड एक आई थिंक थ्योरी एग्जाम होता है, एंड दैट्स इट, डन. वेरी इजी आई वुड से. Nice. But it's so sorted and so structured. I'm so glad. It's very structured. Yeah, life is easy, better. Yeah, I know. Because यहाँ पे कोर्स करके भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने पूरा सीखा है कि नहीं सीखा है. Yeah, so I think कोर्स करना अगेन I believe कि आपको एक बार में नहीं आएगा, आपको बिल्ड ऑन करना पड़ेगा. I am a example of repeat to succeed. ठीक है. एंड व्हाई डू आई से दैट? फॉर एग्जाम्पल जब हम OMC में कंपटीशन करते थे कल्याणी, यू वोंट बिलीव, जब मैं क्रिएटिव हेयर स्टाइलिंग की प्रैक्टिस कर रही थी फ्रॉम 2015 टू 2016, मैंने 2 क्रिएटिव हेयर स्टाइल्स करे हैं. पूरे 1.5 साल मैंने 2 ही क्रिएटिव हेयर स्टाइल्स करे हैं. और कितनी बार करे होंगे ऑन अ डे? एवरेज में 2 या 3 बार तो करती थी. 365 into 3 कर लो आप, 900 टाइम्स मैंने एक साल में ये प्रैक्टिस करी है, लगभग 1.5 साल. सो यू एट 1350 टाइम्स मैंने सिर्फ 2 हेयर स्टाइल्स करे हैं. बट दैट रेपिटेशन इज व्हाट बिल्ट मी. उस रेपिटेशन ने, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हो रहे थे और वो बार बार रिवाइज कर रही थी मैं, और जो चीज मैंने 1 hour 40 minutes में करती थी मैं, मुझे वो फ्लोर पे 15 मिनट में करनी थी in OMC competitions. I think that transition is what
made me succeed. So I'm a big preacher, and that's one value system that I set up for all my courses also. Repeat to succeed. ऐसा नहीं होता कि आप या आपने एक आपने कल्याणी टीचिंग यू सिडेस्कोस, एंड बिकॉज कल्याणी इज बीन डूइंग फेशियल, कल्याणी ने 5,000 फेशियल कर दिए भैया, और यू आर स्टार्टिंग आउट, तो बी काम, बी कूल। पहले 10-50 फेशियल करोगे तो थोड़ा सा मसल्स को आदत होगी, एंड दैट्स फाइन. सो बाय द टाइम you graduate, will you be best? Certainly not, but you can become best if you keep persisting जो आपको कल्याणी ने सिखाया, right? So that is what is extremely important, is to keep repeating. Makeup schools, hair schools, skin schools help you to set you on the track. आपकी रेलगाड़ी सही लाइन पे है, बट वो रेलगाड़ी को आगे चला के माउंट एवरेस्ट तक आपको ही पहुंचाना है, राइट? कल्याणी पुणे से भेज देगी. Okay, one question. I know you have 5 minutes more, I think. How many minutes more to go? 5 minutes? So what time is it? Yes, let's do 5 more minutes. Yes. Oh, पता नहीं चला मेरे को टाइम का. Crazy. India is 7:15. Yeah. Okay. So yeah, my next is at 7 o'clock. So that's 6:44 right now. ठीक है, 5 मिनट और कर सकते हैं. Okay, great. So I want to know about OMC makeup competition, if you can guide, because there are so many makeup artists who have joined on this session today. So please guide on OMC makeup competition. My students are like so many on this chat. Oh, okay. Hi to Kalyani students. Love. Okay. So अगर आपको मेकअप कॉम्पिटिशन्स करने हैं तो आप ब्राइडल मेकअप कर सकते हो. देन ब्राइडल मेकअप में एक नॉर्मल वेस्टर्न ब्राइडल मेकअप करना होता है, क्योंकि इंडियन ब्राइडल थोड़ा सा फैंटेसी लगेगा लोगों को. सो वेस्टर्न ब्राइडल मेकअप करना होता है. एंड देन देयर इज समथिंग व्हाट आई कॉल क्रिएटिव ब्राइडल, जिसमें आपको जस्ट ऑन योर आईलिड्स आपको थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, डिजाइन कर सकते हो. Okay. That's second category of creative bridal makeup. Then third category in makeup is what I call stage makeup. अगर आपने आईबा के कॉम्पिटिशन्स भी करे हुए हैं तो आपने देखे होंगे ना, फैंसी डिजाइन होते हैं आईज के अराउंड. Yes. एंड सो दैट इज कॉल्ड स्टेज मेकअप. और उसमें आप कुछ भी फैंसी कपड़े पहना सकते हो, डजंट हैव टू बी ब्राइडल, बिकॉज इन कमर्शियल वेस्टर्न ब्राइडल एंड इन क्रिएटिव ब्राइडल आपको गाउन्स ही पहनाने होते हैं, क्योंकि वो ब्राइडल कैटेगरीज ही है. स्टेज मेकअप इज नॉन ब्राइडल कैटेगरी, सो यू कैन गो क्रेजी. आई नो पीपल जो डॉयलीज यूज करते हैं, जो टेबल के ऊपर बहुत अमेजिंग डिजाइन नहीं होते, पेपर के बने होते हैं. They use amazing doilies to make art. I know people जो practice करते हैं कि यहाँ से they started a forest and then it transitioned into a ocean. Wow. Okay. So it was like wow. मतलब पूरा मैंने एक बार देखा था, मेरी एक फ्रेंड है जो इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करती है, उसने पूरा फॉरेस्ट बना दिया था यहाँ पे, एंड पूरा लाइक ट्रांजिशन ऑफ ग्रीन टू ब्लू, एंड दैट्स सो डिफिकल्ट. एंड वो पूरा करके एंड मरीन एनिमल्स तक यहाँ पे कर दिया था. लाइक सो दैट इज स्टेज मेकअप कैटेगरी. एंड मेरे को आई थिंक अगेन दैट्स एडवांस्ड कैटेगरी. हाउएवर हैविंग सेड दैट, लोगों को लगता है oh my God, स्टेज मेकअप क्यों करूंगी, क्या फायदा है, कोई क्लाइंट तो आएगा नहीं. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू गिव यू माय 2 cents. मैंने क्रिएटिव हेयर स्टाइलिंग किया था, ठीक है. सो दिस डॉल राइट हियर, कोने वाली, मैं इस कैटेगरी में इंटरनेशनली जीती थी. अभी क्या ये कराने में से कोई आता है? आज तक तो नहीं आया. बट क्या इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है? 110%. आई फील आई लर्न माई ब्राइडल हेयर स्टाइल्स फ्रॉम दिस. दैट्स एंड यूर लाइक, दिस हैज नथिंग टू डू विद ब्राइड्स, ट्रस्ट मी. राइट? बट क्योंकि इसके यस, बिकॉज इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो ब्राइड एज इट इज चाहती है, बट इसके अंदर इतनी सारी टेक्निक्स हैं जो ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग में काम आती हैं. एंड आई थिंक यू शुड ऑलवेज सेट योर सेल्फ अप हायर. क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को, फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेशन के टाइम, वो मेरा वेबसाइट देखते हैं या फिर फेसबुक या IG देखते हैं, लाइक यू डू ऑल दिस, फिर एंड देन लाइक हाँ मेरा हेयर स्टाइल मेकअप तो कर ही लेगी, सो जाते हैं. So, वो क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस लेवल उनका एलिवेट कर दिया है. अगर आप स्टेज मेकअप on a very client to client basis,
राइट? Okay. क्योंकि आपको ऑलरेडी इतना नॉलेज हो गया एंड यू हैव सेट योरसेल्फ फॉर वन स्टेप हायर. So definitely participate in all these categories. Stage makeup is the third category. Then the fourth important category that in makeup is the body painting, and then it's like completely that's much more intensive. So I think OMC has these four important categories when it comes to makeup. That's great. Thank you so much. So it was makeup, hair, styling, and dressing, everything. So thank you so much. Yes. And what should I say? So we are going for one more session with you, maybe next week. After Okay. Okay. for the virus-free salon. Actually, It's yeah. on. Okay. Okay. Yes. So we wish Done. you a lot of Yeah. luck and a lot of success. Take Yeah, care. wish you a lot of love, Kalyani. Thank you for having me. And मेरे को बहुत अच्छा लगा. I think this is the longest I've talked to you in life. And trust me, I did not realize it. So awesome. Awesome having you. Thank you so much for getting up so early and being with us. Have a great day ahead. And you have a meeting, so I won't hook you up for a long time. Thank you so much, Kalyani. Good night, and thank you for everyone listening us. And if you have any questions, please page Kalyani or me. We'll be more than happy to set you up for success. Thank you so much. And Kalyani, if you can just download our live and share it, I'll just send it across to my crazy friends who haven't woken up yet. Thank you. So you can Thank join you. if you want to join the meeting. I will be continuing with the next week agenda. Okay, ठीक है. So, okay, guys, thank you so much for having me. Thank you, Kalyani. I will just be signing off. Bye. Love you. Bye. Bye. So friends, I loved this session. I got to know so many things from US, from UK. मुझे लगता है ये वीडियो आप लोग वापस एक बार देखो and you will get to learn so many new things. Maybe हम लोग सुनते वक्त मिस आउट करते वो वाली चीजें. So I want to run through quickly for the next week. On 18th May, that is Monday, we have Dr. Nayak from Stars Cosmetics. ये ऐसी कॉस्मेटिक कंपनी है, मेकअप कॉस्मेटिक कंपनी जो इंडिया की पहली कंपनी है जो सब कलर कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर करती है. मधुबाला से लेके माधुरी दीक्षित तक so many people have used Stars and lot of people don't know about it. So we have Dr. Nayak, MD of Stars Cosmetics on Monday. 19th May, we have Vipul Bhagat, who is a celebrity makeup artist who has done makeup for, oh my God, so many models and so many actresses like Neha, Dupia, and there's a list of, actresses. I'm going to post it on Facebook and Instagram about Vipul. 22nd May, we have Savio John Pereira, celebrity hairstylist and, hairdresser, who is, a brand ambassador for so many companies who are into hair care products and color companies, treatment products. And 23rd May, we have Seema Jerajani ma'am, who is an exceptional and icon in hair styling. She will be talking about the fundamentals, because हमारे अगर fundamentals अच्छे हैं तो हम कोई भी hair styles अच्छे से कर सकते हैं, and why right education in hair styling is important. So I think Seema Jerajani is the perfect person who can guide us on that. Savio will be guiding us on celebrity hairstyling. So don't miss the next week. It's a celebrity week. We have 4 people and I'll keep posting about it. Keep your calendars hooked with this. So wishing you a great time ahead. Take care. Stay at home. Stay safe. Bye. Love you all.